Hello everyone, today we'll solve question number 2, that is single number 3. So it's just same as single number 1, single number 2 to try both of the question. In this, what we need to do is we need to return that element whose frequency is 1. So let's say this is our array 1 to 1, 3 to 5. Since 3 and 5 getting repeated only 1, so our answer is 3, 5. Test case number 2, that is minus 1 comma 0, minus 1 getting repeated one time, 0 getting repeated one time, so answer is minus 1 comma 0, 0 comma minus 1 is also a correct answer. It doesn't matter, order doesn't matter here, right? So as I said earlier, it's just same as single number 1, single number 2, right? Do try both of the question. So what I'm gonna do is I'm gonna make use of the hash map. Now I will create a hash map for this array. Once I create a hash map, I will map my keys with pairs. After mapping my keys and pairs, I will search through that keys. If somehow my pair is 1, pair means frequency. If somehow that my frequency 1, I would return that element. Iterate through keys, then pairs, right? So let's suppose this is my example. Minus 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, minus 5, minus 5. So since 1 having frequency 1, so it got mapped with 1, 2 got frequency 2, so it mapped with 2, 3 having frequency 1, so it got 1, 4 having frequency thrice, so it got mapped with 3, and 5 having frequency 2, and same with minus 1 having frequency 1. So what I said, create a hash map, map key with pair, search through keys and pair is somehow my frequency is 1. Now return that element, right? Now I will search through read pair. If somehow I get my frequency 1, I'm getting my frequency 1 3 times, right? So my answer would be 1, 3, minus 1. So that is my required answer too. Since minus 1 has frequency 1, 1 has frequency 1, 3 has frequency 1, so answer is this, right? As I said, this question same as single number 1, single number 2. So do try it again, right? Now let's see how it's code gonna work. Int n is equal to nums dot size. Now we'll create our unordered map, right? Since keys and integer are just integer, so let integer name is umap, right? We need to create another array since we need to store that element in an array, right? So what I'm gonna do is I'm gonna make use of the vector since I'm using C++, and vector name is answer. Now I need to create my keys and pairs. Keys and pairs, you know how we'll get our keys and pairs, right? So let's suppose this is our test case 1 to 1, 3 to 5. So what I'm gonna do, let's suppose I took 1. So 1 is just element of the num side. Let's suppose I created another array. So what I'm gonna do is मैं 1 को लूंगा, मैं 1 को इंडेक्स 1 पे डाल दूंगा। जो एलिमेंट मेरा नम्स पे था, मैं एक नया एरे बनाऊंगा, उस नए एरे के इंडेक्स में 1 को स्टोर करा दूंगा और 1 की फ्रीक्वेंसी उधर स्टोर करा दूंगा। लेट्स सपोज मैंने एरे लिया 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ निक नया एरे ले रहा हूँ जिसपे फ्रीक्वेंसी 1 स्टार्ट, जिसपे इंडेक्स 1 स्टोर होगा, उस इंडेक्स 1 पे उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर होगी। सिंस सपोज मैंने पहला एलिमेंट इंडेक्स 1 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इंडेक्स 1 पे मैंने 1 डाला, 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, 3 गॉट स्टोर्ड। फिर 2 आएगा, 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1, तो 2 एट इंडेक्स 2 उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा रहा हूँ। 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1, 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 0, 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1. So yeah, this is the way we are gonna create keys and pairs, right? Keys are just element, pairs are just his frequency. What I'm gonna use for int I is 0, I less than n, I plus plus umap nums of I plus plus nums of I plus plus. In this way I can create my keys and pairs, right? Now I need to search through that keys and pairs. What I'm gonna do is I'm gonna use a for loop for int I is 0, I less than n, and I plus plus. You make use of the auto temp is equal to name of the map umap dot find. Need to find for every element whose frequency is 1. So nums of I. Now I will search, I will iterate and search if temp second equals to 1 means somehow I'll iterating through the pairs, I get
my frequency as 1. In that case, what you want to do is you need to push. We need to store that element in array. So what I'm going to use it, answer dot pushback nums of I, right? And I will return that array, right? Return answer. Answer is that new array in which I will gonna save that element, right? So let's see. Just I did a small mistake here, unordered. Everything seems good. Let's submit. So yeah, our code got submitted. So if anyone having the problem in this line, so let me tell you what I'm doing here, right? So let's suppose I took array 1 comma 1 comma 1 comma 2 comma 2 comma 3, right? Now I created another array with starting index 1 2 3 1 2 3। इसका ये मेरा ओल्ड एरे है और ये मेरा न्यू एरे पे, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं वन को ले रहा हूँ, वन को उसको इंडेक्स पे प्लेस कर दे रहा हूँ और जो उसकी फ्रीक्वेंसी इतना टाइम वो रिपीट हो उसको उसकी वैल्यू पे डाल दे रहा हूँ। वन गेटिंग रिपीटेड 3 टाइम, टू गेटिंग रिपीटेड 2 टाइम, 3 गेटिंग रिपीटेड 2 टाइम। या दिस इज वे इसको कर कैसे सकते हैं, इसके लिए मेथड होता है ये फ्रीक्वेंसी एरे। वी विल क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी एरे। तो यहाँ तो मैप है तो फ्रीक्वेंसी मैप क्रिएट कर दे रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने एरे ही लिया इधर फ्रीक्वेंसी एरे, तो मैं क्या कर रहा हूँ फॉर इंट आई जीरो, जस्ट मैपिंग है कुछ और नहीं है, ठीक है। मैंने एक ओल्ड एरे न्यू एरे पे ओल्ड एरे का इंडेक्स स्टोर कर रहा हूँ, कुछ नहीं, ठीक है। लेट्स सपोज फॉर आई जीरो, न्यू में ओल्ड जीरो पे 1 है, तो क्या हुआ एट इंडेक्स 1 आई डिड प्लस प्लस, मतलब एट इंडेक्स 1 1 स्टोर हो गया है। लेट्स सपोज 1 2 3 इंडेक्स 1 1 स्टोर हो गया आई जीरो पे, फिर आई 1 हुआ, अगेन एन 1 हुआ, मतलब 1 पे फिर इंक्रीमेंट हुआ 2 आया, फिर आई इक्वल टू 2 हुआ, तो नम 1 अगेन फिर बिकॉज 0 1 2 आ चुका है, 2 पे 1 है तो नम 1 फिर से हुआ, 3 स्टोर हो चुका है। तो इन दिस वे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं एलिमेंट को ले रहा हूँ और उसको इंडेक्स पे प्लेस कर दे रहा हूँ। माइनस माइनस भी ऐसे कर सकते हैं, प्लस भी ऐसे ही कर सकते हैं, जीरो को भी ऐसे कर सकते हैं। सो दिस इज द वे यू गोना सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो थैंक यू।